हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। इसको बायमॉलिक्यूलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रिएक्शन की स्पीड है दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल। R is equal to K, substrate and nucleophile. As the rate depends on the concentration of both, so it is referred as SN2. In SN2, the nucleophile attacks from the back side of the carbon to which this weaker nucleophile is attached. यहां पर बच्चों जो क्लोरीन अटैच्ड है ये हमारा राइट साइड में शो किया हुआ है। सो दिस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ दिस कार्बन। तो जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अटैक करेगा, स्लोली इट विल मेक बॉन्ड विद दिस कार्बन, इट विल स्ट्रेंथन इट्स बॉन्ड विद दिस कार्बन, बट साइमल्टेनियसली दिस क्लोरीन एटम will start moving away. ये जो CCl बॉन्ड है ये वीक होना शुरू हो जाएगा। इनिशियली ये जो चार बॉन्ड है बच्चों दैट इज टेट्राहेड्रल हैविंग एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट because the four bonds will have the least repulsion state at this much angle. But when nucleophile will also start forming bond, this bonded pair will start repelling these bonds. And so in between we will have this stage. ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है जिसने कार्बन से बॉन्ड धीरे धीरे स्ट्रांग बनाए, एंड दिस इज द क्लोरीन एटम जिसके जो ये CCl बॉन्ड है धीरे धीरे वीक हो रहा है। स्लोली दिस क्लोरीन इज टेकिंग अप इलेक्ट्रॉन्स. So in this case of transition state, we have triangular bipyramidal geometry. ऐसा क्यों हुआ बच्चों? Because in total here we have 5 electron pairs, and 5 electrons pair have triangular bipyramidal geometry. And finally what happens? This Cl removes and these three bonds get flipped in opposite direction like this. So here I have shown this nucleophile has now formed bond with this carbon from the opposite side to this weaker nucleophile, and now this weaker nucleophile chloride ion which is here, that is completely replaced. So this way these three bonds which initially were in the left side, they got flipped towards the right side. This situation happens when wind blows and the umbrella moves upside down. That got inverted. In the same way, the configuration of this CH3 also got inverted. Now, how we will find whether the given reactants will undergo SN2 or not? यहां पर बच्चों न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है फ्रॉम द बैक साइड. तो बेसिकली if the nucleophile has sufficient space to attack carbon, it will undergo SN2. It means steric hindrance matters. यहां पर 3 H है. This one is the 0 degree carbon. Therefore, it has enough space to attack to this carbon, hence it will undergo SN2 readily. Here I have taken the example of 0 degree, 1 degree, 2 degree and 3 degree carbon. यहां पर बच्चों कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम हैं, तीनों लाइटर हैं, so here we have least steric hindrance. So the nucleophile can easily attack to this carbon. But as the carbon atom gets surrounded by the bulkier alkyl group, जैसे मैंने यहाँ एक मिथाइल अटैच कर दिया,
the little steric hindrance is being created, and it becomes again more when two alkyl group get connected, and here we have the maximum steric hindrance. So the attack to this carbon has now become difficult. So SN2 substitution will follow the order. So it will be difficult for 3 degree to undergo SN2 and will be easier for 1 degree and 0 degree where the steric hindrance is least. जब भी बच्चों किसी एल्काइल हैलाइड में कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, न्यूक्लियोफाइल OH- is also a nucleophile, it is also a base. So there is the probability the reaction may undergo substitution, and also there is the probability कि by just replacing the beta hydrogen that nucleophile may result in elimination. So there will always be a competition whether the reaction should undergo substitution or elimination. In substitution again we have two possibilities. It may undergo SN1 or SN2 substitution. अगर बच्चों सब्स्टिट्यूशन कैरी हो रहा है और उसमें हमें ये चेक करना है whether it will undergo SN1 or SN2. This we have already studied. The stability of carbocation decides whether it will undergo SN1 or not. 1 degree carbocation, 2 degree carbocation and 3 degree carbocation. Out of this we studied 3 degree is the most stable. So this is the order. But for SN2 we studied steric hindrance as the effect. In this case we studied stability of carbocation as the effect. So in this case the effect will be reverse. 1 degree में steric hindrance कम होती है, 2 degree में ज्यादा, 3 degree में और भी ज्यादा. बच्चों यहां पर जो steric hindrance है, यहां पर मैं अभी alkyl halide की बात कर रहा हूं. Even if we have bulkier nucleophile that is also creating steric hindrance, that will also reduce the possibility of SN2, and thus this bulkier nucleophile again would prefer to undergo through SN1 mechanism. Now we also do have the probability the reaction may undergo elimination. और बच्चों elimination के लिए जो possibilities हैं वो क्या हैं? सबसे पहला, अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कियर है there will be more chances कि it may undergo elimination reaction. And second, strength of the base. अगर base strong है, that will pull the H plus ion from beta carbon and will lead to elimination reaction in the formation of alkene. And third, stability of stability of alkene. जितना alkene ज्यादा stable होगा, more will be its formation, and that occurs through elimination reaction. और अगर बच्चों हम reaction conditions पढ़ें, because the competition between these two also depends on reaction condition. अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन कंडीशन अगर ये हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड करती है. अगर हमने जो मीडियम लिया है वो इथेनॉल है, इथेनॉल जनरली क्या करता है? इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लीड्स टू एलिमिनेशन. जबकि अगर मीडियम वाटर है तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन होगा. तो इसको हम यहां लिख देते हैं, मीडियम अगर वाटर है सब्स्टिट्यूशन फॉलोज.
Hence we conclude, अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं प्राइमरी हैलाइड की, तो रिएक्शन बच्चों SN2 जाएगी बिकॉज ऑफ द लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस. सेकेंडरी हैलाइड में again this is the intermediate. If the strength of base is more, it can pull beta H plus, so it will lead to elimination. If the strength of nucleophile is more, it can pull H plus ion, then it can attack the carbon so strongly, it can substitute the chloride ion. So in this case, it will prefer to undergo SN2 reaction. Now, if we have tertiary halide, for this tertiary halide, if the substituted alkene is stable, it will lead to the formation of alkene. So elimination reaction will occur. But if in comparison, the stability of carbocation is more, it would prefer substitution SN1. Now, in the case of bulkier nucleophile, अगर हमारा nucleophile bulkier है, that is base, it will prefer the elimination reaction. In ethanol medium, the stronger base get created, it also will prefer elimination reaction. While medium water अगर लिया जाए, तो water क्या करेगा, इवन अगर हमने कोई बेस डिस्पर्स किया जिसने OH माइनस आयन फर्निश किए, this water will surround this base यानी OH माइनस आयन and thereby reduces its basic character. So it will again prefer substitution reaction. बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हों और अगर आपको इन वीडियो से मदद मिलती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच बच्चों.